Okay, so just a sec. Hi everyone, this is your host Saloni here and we have our beautiful trainer Lakshmi here. So आज and plus हमारे साथ लक्ष्मी के साथ है हमारी मॉडल आज जिनके ऊपर लक्ष्मी पूरा का पूरा सेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है. So I hope everybody is really excited for the session and if you all are just give me a thumbs up and तब तक मैं आप लोग को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं एंड आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है बिकॉज ऑफ कोर्स आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक समर मेकअप लुक क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं. भगवान जाने कि मार्च में जून जैसी गर्मी क्यों पड़ रही है यार, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है मैं बता नहीं सकती हूँ. अब मतलब पहले होता था कि हाँ ठीक है होली तक गर्मी आ जाती थी बट अब ओह माय गॉड बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है. ओके इतनी मैं भगवान से बता रही हूँ इतनी गर्मी मत पड़वाओ. तो यस सिंस समर्स आर हियर तो पंखुरी इज आल्सो हियर विद आवर समर मेकअप. तो आज हम सीखने वाले हैं समर मेकअप लुक एंड क्योंकि समर मेकअप लुक है तो ये एक बहुत ही गो टू लुक होने वाला है जो आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं तो आप सब जगह कैरी कर सकते हैं. तो इस लुक में बहुत ही सिंपल चीजें आज हम करने वाले हैं. आज सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन सीखने वाले हैं कि कैसे आप गर्मियों के लिए अपने स्किन को प्रिपेयर करते हो. देन हम एक प्रॉपर बेस सीखेंगे. बेस के साथ साथ हम कलर करेक्शन सीखेंगे कॉन्टोरिंग सीखेंगे प्लस हम ये सीखेंगे कि हम आज एक न्यूड आई मेकअप करने वाले हैं एंड प्लस गर्मियां है तो हम एक न्यूड लिप्स रखेंगे. बहुत ज्यादा कुछ चटकता हुआ मेकअप हमें नहीं करना है ऑफ कोर्स. हम एक नॉर्मल सा बहुत ही गो टू सा मेकअप करने वाले हैं आज. So I hope everybody is really excited for it and if you all give me a thumbs up and we'll start with the session. Also for the recordings and PDF and for the products, they are all updated on the app and इन सब की links आपको ग्रुप में sorry not in the group but in the description box आपको मिल जाएंगी. आप वहाँ पे जा सकते हैं एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीजों की लिंक मिल जाएगी. रिकॉर्डिंग सारी की सारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है. आप ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं. तो yes without wasting any time let's get started and over to you Lakshmi. थैंक यू सो मच सलोनी एंड यस बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है यार. मतलब ऐसा अभी तो इतने सारे मीम्स बन रहे हैं गर्मी पे दैट अभी मार्च में मई वाली गर्मी कैसे पड़ रही है सच में. चलो सो एनीवेज इतनी गर्मी है तो अब गर्मी में आप लोगों को ये भी पता होगा दैट बहुत ज्यादा अगर आप बेस करके जाते हैं बहुत ज्यादा मेकअप करके जाते हैं तो वो इजिली आपका मेकअप धुल जाने वाला है. ठीक है एकदम स्वेट से. तो इसलिए हम एकदम मिनिमल बेस करेंगे बस हमें क्या करना है कि मेकअप दिखाना नहीं है. ठीक है हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे फेस के जितने भी ना फॉल्स चीजें हैं उसको बस हम हाइड करेंगे एंड देन बस नॉर्मल सा मेकअप करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी मेकअप आप लोगों को पता है कि मॉइस्चराइजर लगाना है एंड स्किन प्रेप करना है. ओके 1 सेकेंड. Yeah, I'm so sorry, Saloni. I got a call. I hope the camera was not off. No, it was not. Lakshmi, I think अगर हम थोड़ा सा कैमरा वो कर सके मतलब मॉडल अगर थोड़ा सा आगे की तरफ होकर के बैठ सके ना it will be great. Okay, थोड़ा सा. हाँ ऐसे. Is it okay now? Yeah. Okay. Okay, so सबसे पहले we are using the light moisturizer that is from Joy. ठीक है Joy का light moisturizer है उसको हम यूज कर रहे हैं बिकॉज मॉइस्चराइजर चाहे गर्मी हो या ठंडी हो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे स्किन के लिए. तो विल यूज दैट एंड समर मेकअप करने वाले हैं डे मेकअप करने वाले हैं. सो आफ्टर अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर विल यूज दी सनस्क्रीन बिकॉज सनस्क्रीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सनस्क्रीन बहुत लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन समर्स. और सिर्फ समर्स में नहीं हमें सनस्क्रीन हमेशा यूज करना चाहिए बट अगर हम समर मेकअप कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज द सनस्क्रीन. ओके so see moisturizer is done and now I'm gonna use a sunscreen. ठीक है तो sunscreen में यूज करने जा रहे हैं. this is from lactocalamine. okay daily sun shield. so I'll use this. Hold this. Okay so now I'm using the sunscreen
और समर मेकअप को करने के लिए ना हमें थोड़ा सा स्किन प्रेप में ही टाइम लगता है, अदरवाइज बिल्कुल टाइम नहीं लगता समर मेकअप करने में, बिकॉज एकदम लाइट मेकअप करना होता है सो एकदम लाइट करेंगे हम, एंड इवन यू वोंट बिलीव। या लक्ष्मी, जब यस आप ये सनस्क्रीन अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद इज इट पॉसिबल कि हम या तो कैमरा हल्का सा ऊपर कर सकें या फिर हम चेयर हल्की सी नीचे कर सकें? या एनीथिंग? ओके ओके ओके, टिल देन मैं ना एक बार ये सब कुछ रिपीट कर देती हूँ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ओके, तो अभी तक आप देख सकते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले अपना स्किन प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्किन प्रिपरेशन में हम लोगों ने सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन किया, तो आप कोई भी फेस वॉश या कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। भले ही गर्मी है, भले ही कुछ भी हो, आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है। तो आप एक लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, एंड देन जब आप मॉइस्चराइज कर लेंगे उसके बाद आपको यूज करना है एक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स समर्स, यू आर सपोज टू यूज sunscreen all the time. Okay? Yes, Lakshmi. Yeah. So, is it okay now? See the camera? Yeah, Lakshmi. It's perfect now. Okay. So the sunscreen is done, and now we will come to the primer. ठीक है, primer is also very important because I told कि क्या होता है कि समर्स में स्वेट की वजह से हमारा जो मेकअप होता है वो गिरने वाला होता है ना, बेस जो होता है वो स्वेट की वजह से निकल जाता है, तो इसलिए वी हैव टू यूज अ प्राइमर. सो I have the primer of Huda Beauty. ठीक है, Huda Beauty का मेरे पास प्राइमर है, so I'm gonna use that. So next you can see we are applying primer here. Primer is really important because since it's summer and you're going to sweat a lot, you really need to prep your skin very well, and primer is one of the steps that you cannot skip at any cost. प्राइमर यूज करना बिल्कुल कंपल्शन है, आप उसको नहीं मिस कर सकते क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्वेट करने वाले हो, गर्मी का टाइम है, तो प्राइमर एक तरीके के स्किन केयर में आ जाएगा, आपको वो यूज करना कंपल्सरी है. Yeah, so after using the primer and all, अब see, अब I told कि I'm not gonna do a lot of base. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा layering नहीं करने वाली हूँ, base बहुत ज्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ. So see, what I'll do, I will just color correct everything. ठीक है, तो उसमें भी color correct में I'm not going to use green color corrector or the orange color corrector. Just what will I do? This is the Krylon Supra color का palette है. ठीक है, this is the concealer palette, and इसमें जो इनके skin shade से जो डार्क शेड होगा, ठीक है, लाइक सी दिस इज हर स्किन शेड. ओके, एंड ये थोड़ा सा डार्क शेड है, तो आई विल टेक ऑन माय फिंगर टिप्स. ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स पे लूंगी, एंड जहां जहां डार्क कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है आई विल जस्ट अप्लाई दैट. ओके, सो सी यहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है, तो विल जस्ट अप्लाई लिटिल बिट हियर. लक्ष्मी, क्या आप प्लीज इसको थोड़ा सा क्लोज लाके दिखा सकते हैं जो भी शेड आप यूज कर रही हैं? या सी दिस इज द शेड. This is FS40 from Krylon Supra color. Okay. Okay. So we are using FS40. Okay. Yeah. Because ये इनकी स्किन से थोड़ा सा डार्क है. Okay, so you can see here we are color correcting, and for color correcting we are not going to use any orange color corrector or the green color corrector. Instead, since we are going to keep the base very minimal, we are going to use a color corrector that is just, or a concealer that is just a skin tone darker than her own skin. Okay, that means जो भी उनका स्किन कलर होगा उससे एक शेड डार्क आप कंसीलर ले सकते हैं, and that is going to work as a color corrector for you. Yeah. इसी से कलर करेक्टिंग हो जाता है, बिकॉज आप जब ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हैं सी, और जो जितने भी स्पॉट्स है और जहाँ भी थोड़ा थोड़ा डार्क है वहां पे आई अप्लाई द सेम शेड, एंड मैं अपने फिंगर टिप से ही ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज फिर जब ब्लेंडर हम यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट ना जल्दी हट जाता है. ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग माय फिंगर टिप्स टू ब्लेंड इट. Okay. Sonia, the palette that Lakshmi is using here is by Krylon, and it is the Supra palette. Krylon का Supra palette यहाँ पे लक्ष्मी यूज कर रही है for the color correction. Kanoj, you can use anything, like you can use the beauty blender also, you can use the brush also, you can also work with your finger. You can use anything that is that you're comfortable with.
या बट आई सजेस्ट कि जब आपको मिनिमल मेकअप करना होता है ना, देन ऑलवेज गो विद द फिंगर, बिकॉज फिंगर से ना आप एकदम थोड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं. दैट्स व्हाई आई यूज फिंगर व्हेन आई हैव टू डू मिनिमल मेकअप. ठीक है, तो सी लिटिल बिट आई विल अप्लाई ऑन द फॉरहेड आल्सो, बिकॉज थोड़ी टैनिंग हो रखी है, तो यहाँ पे भी आई विल अप्लाई. ओके. Kanuja, for your question, the reason why we are not using a lighter shade here is lighter shades are used to for the highlighting part, Highlight. and right now we are just color correcting. We are trying to create a clear canvas for us to work upon. So if you want to create a clear canvas, you're supposed to use a shade darker, okay, not lighter. Lighters are used to highlight your face and not to color correct. Exactly. Okay. So see, almost color correction is done. Okay. So now what will I do? I'll just take the concealer that is of her shade. जो इनके shade का है वो concealer मैं लूंगी. And the shade is FS28. ठीक है. And इसको भी I'll just take with my finger and एकदम little bit I'll apply on the cheeks. ठीक है. Little bit मैं cheeks पे apply करूंगी. On the nose, little bit on the forehead, and on the eyes. See, very minimal makeup we have to do, and you can see I applied a very minimal base that we can do. Okay, and now I'll take the damn beauty blender. Okay, now I'll take the damn beauty blender, and now I'll blend it with the blender. Okay. So Lakshmi, जो आपने अभी अभी किया, that is what we were doing right now. We were doing firstly, we were doing the color corrector. Okay, and after that, as a base, we are applying the concealer of her shade. That is concealer palette, but उसको हम as a base भी use कर सकते हैं. जो Krylon का palette है, Supra palette, we can use that as a base too. Okay, so उसी में से मैंने एक shade इनके एक concealer इनके shade का लिया है, जिसको मैं इनके cheeks पे apply कर रही हूँ. पापा जी ने इधर मत आए. Okay. Okay. And what is the color, like the color that you're using here? Sorry? मतलब the shade number that you're The using. shade was FS28. FS28. Okay. Yeah. Yes. See. Now see the face is done. Okay. And little bit I'll apply on the neck area. जितना part दिख रहा है उस पे हम जो इनका shade है वो same shade apply करेंगे. You know, I'm doing the beach makeup and I'm feeling like यार जल्दी से हो जाए pool party या beach party. I'll enjoy a lot. You know, summers are here. तो सबसे ज्यादा मजा जो आता है वो आता है water parks में. वाटर पार्क में आप पार्टी करो और मस्त मजे करो. एंड एक बार मैं ऐसे नॉर्मली ब्लेंडर चला देती हूँ फेस पे. सलोनी, आर यू देयर और नॉट? Oh yes, and I was continuously speaking, and I was on mute. My God, I was just thinking how Saloni is quiet man. Saloni कैसे चुप है? मैं बोल रही थी ये क्या हुआ, मैं मेरी आवाज नहीं जा रही थी ना. checked, I was on mute and I'm like, oh shit. Okay. Okay, Lakshmi, there's a question here. Yeah. कि where can we buy the Krylon palette? Is it available online also? Yeah, it's available on Nykaa. I guess it's available on Myntra. And जितने ब्यूटी वाले जो अच्छे वाले जो प्लेटफॉर्म्स है उससे अवेलेबल है. और yes, it is original. ठीक है, मैंने ये शॉप से लिया था. ठीक है, बट इट्स ओरिजिनल. वो आपको ना फील आ जाती है यार ओरिजिनल है कि वो डुप्लीकेट है. वो फील आ जाती है आपको टच करने से. Exactly. Yeah, so now to set her face, I'm gonna use the Malayao ka oil control powder. ठीक है, this is a compact powder. So I'll use this and see this is oil control powder. So इससे क्या होता है कि जब sweat भी हमें थोड़ा सा होता है तो ये उसको control करता है, उसको hold करके रखता है makeup को. Okay, so I'm gonna set her face with this. So you can see here we are setting the base now,
And for setting the base, we are using an oil control powder. The reason why we are using an oil control powder is because it's summer. You are going to sweat no matter what. Okay. So Yeah. what we are supposed to do is that we are supposed to control that sweat. Okay. कि वो हमारा base ना खराब करे. So for that reason, we are doing all these tricks and tricks. So just so कि हमारा जो base है, that would just be like that and it would be intact in the way we are going to do it. So इसलिए we are using a sweat control powder here. You know, whenever So, I do my makeup, yeah, absolutely. yeah. So Lakshmi, there's a question here. Yeah. Ma'am, for the neck area, are we not supposed to do the color correction first and then do the like If the it's normal base? needed, then you have to do. अगर needed है, then you have to do. But इनके में needed नहीं है because इनका जो face है उससे जो neck है वो totally matched है. So we don't need that. ऊपर Yes. Okay, अगर तो आपको आप needed है, अगर आपके neck में tanning हो रखी है, then you have to color correct that. आपको सबसे पहले darker shade लेना होगा. Then you have to apply that first और उसके बाद फिर आपका जो shade है उसको apply करना है. So you can see here, in the neck area, if you see that you have tanning in the neck area also, then you're supposed to do the color correction. That means you're supposed to use a shade darker than your own skin. Otherwise, you can just go ahead with the base part. Okay. Also, Lakshmi, what was the price of the Krylon palette that you just showed us? Nice question. I have to see that. Oh yeah, the price is 2850, 2850. But इसके अगर आपको प्रोफेशनल यूज के नहीं लेना है तो you get the single shade also. Single shades भी आते हैं. तो आप अपने शेड के ले सकते हैं. 650 अराउंड आता है एक कंसीलर अगर आप सिंगल में लेते हैं तो. Okay. Yeah. So the base is done, powder is done, and now we will do the contour and the blush, which is so needed. ठीक है. So contour और blush आपका ना long time रहना चाहिए. Okay. So I'm using a powder contour and this is from Neon. इसका ना जो नाम है वो हट गया है because मैं ऐसे ही रख देती हूँ. So नाम हट गया है. So this is of Neon. Neon का contour powder है. So I'm gonna take this shade, brown shade, and see. इनका ऑलरेडी जो कॉन्टोर पार्ट है वो ऑलरेडी एक लाइन ऐसे अलग से दिखती है. ठीक है. सो और उसी पे हम बस हल्का सा कॉन्टोर करेंगे. ओके. बिकॉज ये इनका ऑलरेडी फेस ऑलरेडी शेप्ड है. सो हमें बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है. सो आई जस्ट टेक द कॉन्टोर पाउडर एंड अप्लाई हियर. हमें बहुत ज्यादा उस टाइप का मेकअप नहीं करना है. जस्ट नॉर्मल काइंड ऑफ मेसी काइंड ऑफ मेकअप वी हैव टू डू. एकदम परफेक्ट मेकअप हमें नहीं करना है समर बीच पार्टी के लिए या पूल पार्टी के लिए. ओके. सो इवन whenever I do my makeup for the pool party, then I take a concealer and just जहाँ स्पॉट्स आ गए मेरे को वहां मैं हाइड करती हूँ. then I don't apply even the base. मैं अपने फेस पे बेस भी अप्लाई नहीं करती. I just hide the dark spots and then I just set my face with a loose powder or the compact powder and थोड़ा बहुत blush, contour, and that's it. Because I know कि बाहर, yeah. So let's say yeah. Tell me. There's a question here. What is the difference between a compact powder and a loose powder? I mean, how does it work on the skin? See, compact powder और loose powder में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. It is said, ठीक है, it is said कि जो loose powder होता है वो बहुत फाइन होता है. उससे जो हमारा जो सेट करने जो हम बेस सेट करते हैं वो बहुत फाइन सेट होता है. बट आई बिलीव कि ये उल्टा होता है. ठीक है. इट इज माई बिलीव बट आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट. ठीक है. कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छे से बेस सेट होता है. एंड नॉर्मली इट इज सेट कि जो लूज पाउडर है वो बहुत फाइन होता है. वो उसके जो ग्रेनुअल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस, मेन डिफरेंस इन दिस. And yes, see, one more thing. If you don't have the nose contouring brush, then how you can do the nose contouring? Just hold the brush from here. Okay, just hold the brush from here and take the product here and just do the nose contouring. These are the tips and tricks that. एक और बात थोड़ा सा ब्रश नीचे कर दीजिए. ब्रश दिखा नहीं आपने कैसे पकड़ा.
Okay. Yeah, see, is it now visible? Yeah. It is visible now. See, so what I do, ये normal fluffy brush है, ठीक है? Normal fluffy brush है. So how I do, I just hold it like this. ठीक है? जब भी मुझे nose contouring करना होता है, तो I hold like this. Okay, and then I take the product. ठीक है? I take the product and then I do the nose contouring. Because you know, मैं इतने सारे nose contouring के brush ले चुकी हूँ, but वो सब ना मेरे से गुम हो जाता है. ठीक है, सो आई ऑलवेज हैव टू फाइंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि मैं कैसे नोज कॉन्टूरिंग कर सकती हूँ नॉर्मल ब्रश से. सो दैट्स व्हाट इट इज. ओके, सो सी कॉन्टूरिंग इज डन. आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. Yes, everyone, please let us know कि अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने सिखाई हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट अस नो अबाउट इट. नाउ आई टेक द ब्लश. ठीक है, ब्लश हमें थोड़ा अच्छे से अप्लाई करना है. ओके, सो दिस इज द ब्लश फ्रॉम मार्स. मार्स का ये छोटा सा मिनी ब्लश है. एंड आई टेक द पाउडर ब्रश और उससे मैं इसको अप्लाई करूंगी. ठीक है, so see, I'll just apply over the contour. Okay, contour to just ऊपर. I'll apply it like this. And see, if you want snatched look, yeah, अगर आपको एकदम snatched look चाहिए, then you have to apply the blush just 2 fingers away from your nose. Okay, आपकी nose से 2 fingers दूर होना चाहिए blush अगर आपको snatched look करना है तो. And थोड़ा सा you have to apply on the forehead also. Yes, hello. Okay, so you can see here कि हमने क्या किया है. We have done the contouring here and now we are applying the blush. So the contouring is done to create little bit of shadows on your face, because once you'll be done with the base, you will see that your whole face will not have any kind of color or dimension to it. So the contouring is done to create some dimensions and to create some shadows on your face. And then you can see that we are applying blush here to add some color to the face, because एक नॉर्मल आदमी का फेस जो होता है वो बिल्कुल वाइट नहीं होता है. तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा रेडनेस दिखेगी, थोड़ा सा कुछ चीजें दिख रही होती है. तो वी आर जस्ट मिमिकिंग दैट विद आवर मेकअप हियर. तो हम लोगों ने ब्लश अप्लाई किया, वी हैव अप्लाइड द कॉन्टूर. एंड यू कैन सी कि लक्ष्मी ने जो ब्लश एंड कॉन्टूर अप्लाई किया है, शी हैज अप्लाइड इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज वी वांट द कॉन्टूर एंड द ब्लश to give us a snatched look on our face. We want to have an uplifted look. अगर आप इसे नीचे की तरफ ब्लेंड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ ड्रूपी इफेक्ट, थोड़ा सा एजेड वाला लुक मिलेगा. अगर आप ऊपर की तरफ करोगे तो यू आर गोइंग टू लुक लिटिल यंगर. Okay, so let's see, there are few questions here. Yeah. So there's a question that, ma'am, can we use the sponge also for the blush? No, actually, if you want, then you can use. See, अगर आपको sponge use करना है, then you have to keep your sponge very dry. आपको dry रखना पड़ेगा. If you want to use the powder blush, ठीक है, आपको powder blush use करना है, then you have to keep your sponge dry. और अगर आपको क्या बोलते हैं उसको liquid blush apply करना है, then you can use the damp beauty blender, okay, or damp sponge you can say. एंड लक्ष्मी, आप सबसे लास्ट में हमें अपना मेकअप दिखाएंगी ना? या श्योर, बिल्कुल दिखाएंगे. ओके, so now I'm gonna use a eyeshadow palette जिसमें कि पूरे nude shades, ठीक है, it all like almost nude shades हैं. So I will take some nude shades like with this, ठीक है. So firstly I'll take these colors, okay, and I'll apply on all over the eyes. Okay, this is the fluffy brush from the Neon. Okay, so I'll apply on all over the eyes. And see, we are not going to do the liner, the mascara, ये सब हम कुछ भी नहीं करेंगे, because this is a summer beach makeup. और जब आप करके जाते हो ना बीच पे या फिर पूल पार्टी पे, then वो लाइनर वगैरह हट ही जाना है. ठीक है, आप भले वाटर प्रूफ भी लाइनर लगाएंगे, तभी भी इतनी ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है तो वो हट जाना है. और वो हमें परफेक्ट मेकअप दिखाना ही नहीं है. सबसे मेन जो रीजन है कि हमें परफेक्ट मेकअप बीच पार्टी या पूल पार्टी के लिए चाहिए ही नहीं. हमें एकदम मेसी सा नॉर्मल सा मेकअप चाहिए. दैट इज
कि लगे कि हाँ कुछ मेकअप किया ही नहीं है, बस नेचुरल है। लड़कों को समझ नहीं आना चाहिए ना कि हमने मेकअप किया है। बिल्कुल यू लक्ष्मी, we are just यस going to make the we are just going to make them believe that we look like this. या वी लुक लाइक दैट। दिस इज आवर एक्चुअल शेड, दिस इज आवर एक्चुअल कलर। ओके। लक्ष्मी, आप एक बार पैलेट थोड़ा सा पास ला करके दिखा सकती हैं कि आपने कौन कौन से कलर्स यूज किए? आई यूज्ड दिस एंड दिस टिल नाउ। ओके, ठीक है, इस मतलब इन आप दोनों थोड़ा सा कलर्स का पीच यूज, शेड में जा। या इन दोनों कलर्स का यूज करके आई अप्लाइड ऑन ऑल ओवर द आईज। एंड नाउ ये थोड़ा सा एकदम लाइट पर्पल शेड बोल सकते हैं या पीच शेड बोल सकते हैं, इसको मैं अपने फिंगर से लेके, ठीक है, अपने फिंगर से लेके मैं थोड़ा सा मिडिल पे अप्लाई करूंगी। लक्ष्मी, कैन वी गेट द मॉडल एंड लिटिल क्लोज टू द कैमरा जब आप आईज पे काम कर रहे हो तो? वेट आई जस्ट जूम इट आउट। ओके, जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा सा जूम कर दो। लाइट ऑफ हो गई, या आई मीन रिंग लाइट। मैंने भी नोटिस किया। या या ओके, या सी आईज ओके, डाउन। थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ, ओके, सही सही सही, परफेक्ट। या परफेक्ट। आई ऑलवेज डू परफेक्ट। यस, लक्ष्मी इज परफेक्ट, ऑलवेज दो सारे काम appreciate परफेक्ट करते yourself. Yeah. So see, this shade I'm applying, is it visible? This shade I'm applying हैं। with the fingertips. ठीक है, फिंगर टिप्स से बस इसको क्या करना है, ऐसे नॉर्मली बस आप इसको मर्ज कर दो। I'm getting party vibes, man. लक्ष्मी, अब आप इसके बाद ना आप दोनों लोग चले जाना पार्टी करने। कहाँ भाई, रात को कहाँ जाएंगे पार्टी करने, वो भी समर पार्टी मेकअप करके। कोई बात नहीं, ऐसे ही चले जाना। मैं तो मैं होती तो मैं तो फुल्की खानी चल चलती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं मेकअप करके वाह फुल्की वाह खा वाह वाह। हाँ बेटा, हम ही को सब देखेंगे, हम ही को सब देखेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप सो दिस आई कलर इज हमारे ऑल्सो, या ऑडियंस। यस यस लक्ष्मी, बोलिए बोलिए। बताइए। नहीं नहीं, बोलिए, आप बोलिए पहले। नहीं, मैं बस पूछ रही थी हमारी ऑडियंस से कि ऐसे जैसे मैं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा ऐसे मेकअप करके जा सकती हूँ। कौन कौन हमें कंपनी कर सकता है ऐसे मेकअप करके चलने के लिए, ऐसे फुल्की वुल्की मैं खाने? अभी आपको सिंपल सा। अपना मेकअप दिखाऊंगी ना सलोनी, देन एवरीबॉडी विल बी लाइक कि अच्छा ऐसे हम कहीं बाहर जा सकते हैं। अरे लक्ष्मी, सब जी, जगह चल सकते हैं, आप हाँ तो बोलो। ओह डेफिनेटली, आप ओ, आओ तो रायपुर जहाँ मैं रहती हूँ, आप आओ तो फिर चलते हैं। बिल्कुल। यस, सो सी डाउन आइज। सो दिस मेकअप इज डन ऑन द आईज। ठीक है, आईज में हमने एकदम लाइट सा मेकअप किया है, ठीक है। एंड नाउ 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 व्हाट विल वी डू लक्ष्मी लक्ष्मी अभी। लक्ष्मी लक्ष्मी, या आईज कट जा रही है, थोड़ा सा नीचे हमें चाहिए। मतलब या तो कैमरा ऊपर हो जाए या तो मॉडल नीचे हो जाए, क्योंकि वो आईज जूम करने पे ना कट जा रही रुको, इज इट ओके? है। ना ना ना, वेट, टेढ़ा हो गया है। आई नो, हाँ, उसको हल्का आई सा वाज और। हाँ, सेटिंग। बस बस बस, अब सही है। ओके, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं? या श्योर। ये ना मेरे कैमरा को आई डोंट नो क्या हो गया। कोई बात ओके, नहीं। या परफेक्ट। ओके, या सो नाउ सी नाउ वी विल डू द अंडर आईज। सो अभी तक हमने सारे मेकअप एकदम न्यूड किया है, राइट? सो हम अंडर आईज पे थोड़ा सा पॉपअप देंगे। ओके, सो अंडर आईज पे हम क्या करेंगे, इनका जो ड्रेस शेड है उसके अकॉर्डिंग वी विल टेक द कलर, लाइक लेट मी टेक अ ग्रीन शेड। इनका जो ड्रेस है वो थोड़ा सा ग्रीनिश शेड का है। ओके, सो विल टेक दिस कलर। वेट, लेट मी टेक सम मोर ग्रीन कलर्स। Yes, see, we will take this shade. The shade is visible. See, यस लक्ष्मी, यस इट इज। so we will take this shade and this is a small blending brush. ठीक है, ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है एंड ये नॉर्मल ग्रीन शेड है इनके ड्रेस शेड के अकॉर्डिंग। वी विल टेक दिस शेड एंड वी विल डू द अंडर आईज। ठीक है, ऊपर। ठीक है, सो वी विल डू द अंडर आईज नाउ। एंड अंडर आईज में हम थोड़ा सा डार्क शेड दे, सो दैट यू नो अभी तक सब चीज फीका फीका सा था, अब थोड़ा सा। Yes, Satakshi, don't worry. We are trying to keep the session bilingually.
So if there's anything that you feel like we have missed in English, we'll be more than happy to help you out. And I will quickly repeat everything that we have like done on the eyes in English. Okay. So what we have done till now is we have first taken like a peach kind of color and we have applied it all over our eyes as a base. And then we took kind of light purple kind of color. And then we used our fingers and applied it right in the center or below our crease area. Once we applied it below our crease area or on the eyelid, after that you can see we are doing the lower waterline. Sorry, the waterline. Okay. So we are doing the waterline here. And for the waterline, what we are doing is we have taken a dome brush here and we are applying the exact color that the model is wearing here. So that to add, little bit of fun to our makeup. Otherwise, what is other, it would have become plain. So in order to add some fun, we are using we are doing the lower, what do we call it? Lower eyes, we can say. Yeah, it's waterline. Oh no, lower eyes is enough. And see, Yeah, okay. one more thing, we have not applied the liner, right? हमने liner नहीं apply किया है. So we'll take the same shade and we will take a angular brush. ठीक है क्या? Angular brush लेंगे हम and same shade shape. What will we do? We will just make a line here, so that ये हमारा liner का भी work हो जाएगा. Okay. So you can see here, हम यहाँ पे liner की तरह जो हमारा eye shadow है, we are using it as a liner also. Why? Because we are not going to use the traditional line. So we are just going to use the same eyeshadow to create a look of a liner. And it is going to add a lot of fun to your makeup because it will look like, a colored makeup here. Yeah. I mean, colored liner. Yeah, so now we will do the eyebrows. Eyebrows are very important because जब तक if we are doing the nude eyes, then अगर आप eyebrows नहीं करते ना तो आपका पूरा face ना फीका फीका सा लगता है. So we are going to do the eyebrows. So eyebrows के लिए this is the Europe Girl eyebrow palette. Is it visible? Yes, Lakshmi, it is. This is the Europe Girl eyebrow palette जिसमें ये angular brush आता है जो अभी मैंने use किया था. The same brush I'm gonna use for the eyebrows. Okay. So you can see here, we are going to do the brows finally. Why? Because we have done a nude makeup here. And if you don't do your brows, it is going to look, it is not going to give a very good look here. So that is why it is very necessary to do the brows. Yeah, so for the brows, we always start with the center part. ठीक है, हमेशा center part से start करते हैं, and then we fill it. Okay. Okay, and now जो हमारा ये front part we will fill that. ठीक है, तो इसके लिए हमें ज्यादा कलर्स नहीं लेने, we will just snatch it. And यहाँ पे जो already हमारे ब्रश में कलर था उसको हम अप्लाई करेंगे. Okay. यहाँ पे एक हमने लाइन बना लिया है horizontal and then we will take little bit color and फिर हम इसमें vertical lines draw करेंगे क्योंकि फ्रंट की जो हमारी आईब्रोज होती है वो वर्टिकल होती है. So we will draw the vertical lines. So here you can see we are doing the brows. And if you notice, we haven't started the brows right from the starting. We started doing our brows from the center. So you are going to first draw it exactly like your natural brows. You're going to fill them in exactly in the direction you have your natural brow hair. And once you're done with that, only after that you're going to come in the front and whatever product is left in your brush, you're going to use that product only to do the front portion. And since we have the brow hair like going upward in the front direction, we are going to fill them in the same direction. Do not change the direction of your brush, otherwise the brows are just going to look very cartoonish. So don't do that. Draw your brows exactly in the shape they are.
Yeah, so now we will brush it up upwards. अब इसको हम upwards थोड़ा सा brush करेंगे so that जितने products हैं सब merge हो जाए. Okay. Yeah. So see, eyebrows are also done. And now we will do one thing. Eyes में मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि एकदम से जो green color है वो आ गया है. So इसके लिए हम क्या करेंगे? We will take the fluffy brush and उसपे हमने जो nude shade आई से अप्लाई किया था वो nude shade को हम नीचे भी लोअर आई से भी अप्लाई करेंगे. ओके, बिकॉज ग्रीन शेड अलग से लग रहा है कि अलग से आ गया. विल टेक द न्यूड शेड विद द फ्लफी ब्रश. ठीक है, लिटिल बिट ओनली ऊपर एंड विल मर्ज इट आउट. ठीक है, इसके साथ हम इसको मर्ज कर देते हैं सो दैट ये अलग से नहीं दिखेगा. इट विल लुक सो नाइस. So you can see here, since we have applied kind of green blue kind of color here, in order to merge it with our eyes or with the whole eye makeup that we have done, we are going to take the same shade that we have applied on the upper eyes or on the lid, and we're just going to buff it together, like the green and the nude shade. We're just going to buff them together so that they look very blended, and plus it is going to complement the whole eye makeup here. Yeah, and now we will apply the kajal. So kajal, you can apply any of your favorite kajal. So I'm gonna use, this is the kajal of, I guess, RS का था या इसका भी इसको छिल छिल के मैंने ऐसा कर दिया कि इसका नाम चला गया है. ओके, बट दिस इज सो नाइस काजल मैन. बहुत अच्छा है बिकॉज ये एकदम वाटर प्रूफ है. ये बिल्कुल भी नहीं जाता है वाटर से या आपके स्वेट से या आपके टीयर से. So now here you can see we are applying the kajal in our waterline. The kajal is like not really compulsory. If you want, you can apply it. It is just going to and you can apply look. Yes. Some dramatic yes, kajal also. Some dramatic according to your dress, according to the color you want, the color theme is there. उसके according आप kajal apply कर सकते हैं. Okay. Yeah. Just have fun. Summer. Yeah, just have fun. Summer. Exactly. Now I'll apply some highlighter because highlighter आप जब apply करके जाते हो ना summer party में, then वो अलग से glow करता है because जो sunny day रहता है पूरा तो वो अलग से glow करता है. So I'm going to apply the highlighter of Revolution makeup. उसमें से I'll take silver and pink shade और इसको मैं apply करूँगी on the cheekbone. एक सर्कुलर मोशन में हमेशा अप्लाई करना है बिकॉज इससे वो पूरा मर्ज हो जाता है and it looks so nice. So here you can see हम यहाँ पे apply कर रहे हैं अपना highlighter. We are applying the highlighter here, and the highlighter is by Makeup Revolution. And you can see the brush, the strokes that we are putting, they are in circular motion. Why? Because circular motion is going to give you more natural and blended look compared to if you're just going to do it in the stroke motion. So always go in the circular motion. It will give you more natural and blended effect. Yeah. So now after applying on the cheeks, we will apply here on the nose and here on the tip of the nose. Okay. Now some over here on the chin area. Okay, and we will take a small brush, small eye brush, okay, to apply on the eyebrow bone. Okay, I'll apply here. So you can see we are applying the highlighter on all the high points of our face. यानी कि जो भी आपके face के high points है, जैसे कि आपके you have your cheekbone, you have your bridge of the nose, you have your cupid bow, then you have the brow bone. You are going to apply the highlighter on all the high points of your face. Yeah, on the inner corners too. Yes, okay. And it is going to be very open eye वाले, बड़ी बड़ी आंखें दिखती है अगर आप inner corners पे लगाते हो तो. Exactly.
एंड नाउ वी विल डू द लिप्स, ठीक है। लिप्स में सी आपको एकदम न्यूड शेड अप्लाई करना है, ठीक है। न्यूड या यू कैन यूज सम दैट काइंड ऑफ कलर, क्या बोलते हैं उसको, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग द वर्ड, या नियॉन कलर्स, या नियॉन कलर्स, कभी कभी यू नो वर्ड्स नहीं आते हैं तो you can use neon colors like एकदम pink kind of color, but I'm using nude shade, ठीक है, because I love the nude shade even at the night party also. So I'm gonna use the nude shade of neon, ठीक है, neon का, this is super stay 18 nude and this is literally, this lipstick is like super stay because ये 12 hours तो easily रहते हैं. So I'm gonna use this. यस नीलिमा जी, आप ये मेकअप कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत हमने ऐसे ड्रामेटिक सा मेकअप नहीं किया है। तो आपका अगर कोई Yeah. भी कैजुअल सा फंक्शन है, आप बाहर जा रहे हो, आप किसी छोटी मोटी पार्टी में जा रहे हो, तो आप ये मेकअप वहां पे बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। तो यू कैन यूज इट इन ऑल द ओकेजन एंड इट विल लुक ग्रेट। You know, मैं इनकी लिपस्टिक लगा रहा ना, face is laughing. मैं Yes, पता है जैसे मैं घर में मैं continue. बाकी लोगों के ना ऐसे मेकअप कर लेती हूँ, मैं बाकी लोगों के थोड़े बहुत, बट मुझसे ना लिपस्टिक किसी की नहीं लगती, तो आई जस्ट गिव द पर्सन कि ये लिपस्टिक है, ये लगा लो आप प्लीज। मुझसे नहीं It लगता है कि happens. It मैंने happens, man. It happens. मैं किसी और के लिपस्टिक आप लगाओ ना, तो उनका जो लिप शेप है ना, वो आप मतलब यू नो जाहिर नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो, तो दैट्स व्हाई शी इज लाफिंग, वो मतलब वो कुछ और कर रही है एंड आई वांट टू से समथिंग एल्स, इट हैपेंस। मैं मैं लिप लाइन करके दे देती हूँ लोगों को, ठीक है मैंने लिप लाइन कर दिया है, अब आप प्लीज लगा लो, मेरे से लगेगा नहीं लिपस्टिक। एग्जैक्टली। सो सी इसमें हम थोड़ा सा यू नो अभी तो मैंने स्टिक लिपस्टिक अप्लाई किया है, नाउ आई हैव अ लिपस्टिक पैलेट, तो उसमें से मैं थोड़े और शेड्स उसमें दूंगी। दिस इज द लिपस्टिक पैलेट फ्रॉम मिस क्लेयर का ये लिपस्टिक पैलेट है। सो सी इसमें बहुत सारे ड्रामेटिक शेड्स लाइक दिस दिस दिस, तो इसमें से यू नो मैं थोड़े थोड़े लिपस्टिक्स यहाँ पे सेंटर पे दूंगी अपने फिंगर्स से। आपको ना समर से आप जब मेकअप करके जा रहे हो तो आपको प्रॉपर कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर एकदम लिपस्टिक नहीं लगानी, एकदम उसको मैसी सा लगाओ यार, ताकि यू नो एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमने एकदम प्रॉपर मेकअप नहीं किया है, हमने बस नॉर्मल सा करके आ गए हैं, बट फिर भी इतने अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। Yes, exactly. Good creation for your question. So I have a sensitive skin. I have a combination sensitive skin. So for my skin, I usually go for the Cetaphil moisturizer. The sensitive skin का अलग से Cetaphil का moisturizer आता है. You can go with that. And sunscreen के लिए you can go with Minimalist. Minimalist की Yeah. sunscreen is great. So yeah, both the things are going to work great if you have sensitive skin. And trust me, Yeah. I do have sensitive skin, so it works for me. I think it will work for you also. लक्ष्मी आपका कैमरा ऑफ हो गया। I know कॉल आ गया था, sorry. कोई नहीं, So do I have to zoom in? थोड़ा सा जूम करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा तो हो ही नहीं रहा, ट्राई करो आप, क्या बताओ जाए। लग रहा है लॉक हो गया मेरी स्क्रीन। कोई बात नहीं, आप चेक कर लो। नहीं नीलिमा जी, क्योंकि हम लोग एक समर मेकअप कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो लेयरिंग तो वो मिनिमम टू मिनिमम रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा जितनी आप लेयर्स करोगे उतने ज्यादा आप स्वेट करने वाले। तो इसके लिए हम लोगों ने फाउंडेशन नहीं यूज किया था, हम लोगों ने सिर्फ कलर करेक्शन किया थोड़ा सा, एंड देन कलर करेक्शन के बाद हम लोग ने थोड़ा सा बस एक मतलब सेम लाइट उनके स्किन टोन का कलर करेक्ट कंसीलर अप्लाई करके फिर जस्ट डन द बेस। फाउंडेशन हम लोगों ने नहीं यूज किया है। या सो इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा सलोनी, आई डोंट नो व्हाई। परफेक्ट, सही है, because we don't have ठीक to है। do eye makeup now. It's Yeah, perfect. so everything is completed. Just mascara is left. We'll complete the look with the mascara. So mascara I'm gonna use of Maybelline. Okay, Maybelline ka mascara. This is the Lash Sensational Waterproof Mascara. Okay, so we'll use this. नीचे तो सबसे पहले ना मस्कारा आपको थोड़ा सा ऐसे डाउनवर्ड्स, पहले थोड़ी आईज डाउन करके मैं मस्कारा अप्लाई करना चाहिए।
so that ऊपर में जितने कलर्स रहते हैं वो हट जाते हैं. Okay, now upwards, थोड़ा नीचे, yeah, थोड़ा और नीचे. So now I will apply here, like this. मस्कारा आपको अच्छे से करना है. मस्कारा एकदम अच्छा यूज करना है, बिकॉज अगर आप पूल में गए और आपको मस्कारा उतरने लगा यू कैन थिंक कि वो कैसा होगा सीन. सच में. तो मस्कारा तो वाटरप्रूफ ही यूज करिएगा. इफ यू यूजिंग मस्कारा और काजल, ये ना वाटरप्रूफ यूज करना क्योंकि हम जाने वाले हैं पूल में या फिर कोई भी ऐसी Yes. जगह, तो काफी डेंजरस हो सकता है अगर आप वाटरप्रूफ ना यूज करें तो. यस, फिर हम पहले जितनी तारीफ मिल रही थी उतनी फिर हमारी मजाक उड़ाया जाएगा. ओ माय गॉड, सी मस्कारा थोड़ा सा ऊपर लग गया आईज पे, बट डोंट वरी, उसको हम रिमूव करेंगे. या थोड़ा ऊपर. यस नीलिमा जी, जो हमारा वो है ना मेक रिंग लाइट है, वो इस वक्त येलो लाइट में, इस वजह से वो आपको लग रहा होगा. क्या लग रहा है? शी सेइंग कि आपने येलो लाइट यूज किया या फिर व्हाइट लाइट, बिकॉज मेकअप हल्का सा येलो दिख रहा है. अभी? यस, अभी से. या बट मेरे रिंग लाइट में कुछ है कि व्हाइट लाइट जब आप यूज करते हो ना तो धीरे धीरे डिम हो जाती है. ओके. That's why I use yellow light, but I'll show the whole look in white light also, don't worry. Yeah, mascara is game changer thing. मुझे ना मस्कारा लगाने नहीं आता है, तो आई डू हैव अ मस्कारा, बट वो रखा हुआ है बस. यप. See, makeup is done, and हम इसको और थोड़ा सा funky कैसे बना सकते हैं? I'll just say this. Wait. See, the hairs are like, hairs will be open, but you can just do something like this. Okay, जिस तरफ से भी आपको सेट करे, do it. जिस तरफ से बिकॉज सबके साइड्स अलग अलग होते हैं, उसको आप प्रॉपर आप ही जान सकते हो. ओके, सो नाउ वी कैन यूज सम टियारा. ओके, फॉर द पार्टी, फॉर द पूल पार्टी और फॉर द बीच पार्टी, टियारा एंड सम फ्लावर वाले गार्लैंड्स, बिकॉज आई यूज दिस इन माय पूल पार्टी. ठीक है, लिटरली आई यूज मैन, बिकॉज ये बहुत फंकी लुक देता है. तो सी, Saloni, are you on mute now? Yeah, sorry. I knew that one. Okay, so आप अपने बाल सेट करके you can use a tiara. Wait, बाल सेट नहीं हुए. Okay, so you can see here कि since it's going to be a pool party, तो आप ऐसे tiara वगैरह भी यूज कर सकते हैं, because I've seen lot of people using tiaras in the pool party. तो आप ऐसे अपने बालों को मस्त सेट करके, हाँ, आप सेट करके मस्त ऐसे tiara वगैरह यूज कर सकते हैं, and it is going to look great. Yeah, and yes, one more thing we don't have to forget is I'm finding for that. Yeah, makeup fixer. Makeup fixer you don't have to forget. So this is the makeup fixer of Europe girl, because ये आपके makeup को long lasting बनाने वाला है. Close your eyes. Okay, so let it dry. And so finally here's the whole look. वैसे मेरे पास एक और टियारा है. See, इसका सेट है. You can use this. तो ये भी बहुत प्यारा लगता है. मैं यही सब यूज करती हूँ पूल पार्टी में. अगर सलोनी आपने शायद देखा होगा ना, I always use these only. I have seen you. या इयरिंग भी इसके सेट आप ले सकते हो, फ्लावर्स वगैरह का. That looks so nice, funky kind of. So this is what we can do for the pool party or for the beach party. Okay. Yes. Yeah. So now I will do. काफी लाइट सा मेकअप है. It is something that I think we can wear everywhere.
कहीं पे भी जाना आप पहन सकते हैं ऐसे मेकअप। या एग्जैक्टली। सो इसमें से हमेशा आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीजें करनी होती है। लाइक आपका जो ड्रेस है, आप जिस थीम पे जा रहे हो उस थीम के अकॉर्डिंग यू कैन यूज सम एसेसरीज अगर यूज करके इट विल लुक सो गुड। ओके, यस। सो द लाइट इज ऑफ नाउ। सो इज इट विजिबल टू यू ऑल? मैं एक बार क्लोज से आपको दिखाती हूँ फोन निकाल के। ओके, अपने स्टैंड से आई या रिमूव द फोन देन आई शो। आपको लेकिन आपको रिंग लाइट में ना वाइट लाइट कर देनी चाहिए थी थोड़ी देर के लिए। वो हो जाता। आई एम डूइंग इट, वेट ना 2 मिनट बस। ओके श्योर। गुन्नू फॉर योर क्वेश्चन, सर्टिफिकेट जो है वो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे एंड आपकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स फॉर फ्री। फ्री में आप ये कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन सर्टिफिकेट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। बट रिमेंबर यू विल हैव टू पे लाइक ₹5 फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के लिए आपको ₹5 पे करना पड़ेगा, तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। Yes, Lakshmi, I think we can see it. Lakshmi, can you do it in the portrait mode? Yep, perfect. And you're on, अगर आप कुछ बोल रहे तो। ओह रियली, आई वाज स्पीकिंग। आपका मेनिया पकड़ लिया मेरे को। बिल्कुल। या सो आई डोंट नो, थोड़ा थोड़ा आई गेस येलो दिख रहा है बट आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। बट या फ्रंट से इट इज, मैं फोटोज सेंड करूंगी ना, आई विल सेंड द फोटोज इन द कोर्स ग्रुप। बट फ्रंट से इट इज लुकिंग लाइक टोटली लाइक मैच्ड विथ हर कलर। ओके, Yes. तो you can see here, यहाँ पे मेकअप हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। You can check जो पूरा मेकअप हुआ है। We will send the pictures also in the group. आप ग्रुप में पिक्चर्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी so that you know कि मतलब अगर आप ये रिक्रिएट करो तो you can just do it. yeah, so finally I'm done with it. Hi, this is Anchor Lakshmi. तब से everybody must be thinking कि आवाज कहाँ से आ रही है। So this is Anchor Lakshmi and ये मैं already अपना मेकअप कर चुकी थी। That's why I thought कि आज मैं मेकअप खुद पे नहीं करती हूँ, आज I'll do on somebody else. So she was my sister. Okay. So Yes. is there any extra queries and all? No, Lakshmi, I think सारी queries हम लोगों ने ले ली थी during the session only. So we are done with all the queries also. And yes, everyone, you can let us know, did you like the session and who is going to recreate this look? I mean, this look. Let us know. And who is कौन going to enjoy the pool party in summer? Yes, let us know कि कौन कौन pool parties है वो enjoy करने वाला है summers में, because मुझे तो बड़ी ही पसंद है parties and pool parties, so I love. So yes, I too love it. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को गर्मियों में ना पूल में रख दो यार, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बस पूल में मस्त नहाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बस that's it. Even I want that. I want कि पूरा मेरा ऐसे पूल हो मेरे घर में, मैं वहीं पे बैठी रहूं दिन भर, उसी में पड़ी रहूं, भगवान कोई काम न करने बोले, इतनी गर्मी होती है। और उसके बाद मुझे इतनी गर्मी में कॉलेज जाना पड़ता है। मेरा 12 बजे से मेरी क्लास होती है, तो मुझे 11 बजे जाना पड़ता है। Wow, nice. And Saloni, today you have done makeup. Yes, आज मेरा बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। आज मैंने दिन भर से मैं पढ़ रही थी। हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं दिन भर पढ़ाई कर लेती हूँ ना तो मुझे कुछ चस्का चढ़ता है, मैं मेकअप कर लेती हूँ। That's nice, great. Okay. So anything else like? Yes, everybody. I think सबको ये मेकअप आज बहुत अच्छा लगा था, because जब आप कर रहे थे तो लोग बोल रहे थे that मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। So yes, I guess सबको आज का मेकअप बहुत अच्छा लगा and we are happy that you really liked this session. Yes, thank you so much. Thank you so much, everyone. Now I guess that we are going to end the session. Yes, we are going to end the session now. And just a quick thing I want to tell all our people here, that if you like the session like these,
You can just subscribe to our YouTube channel because we come live twice a week. हम 2 बार हफ्ते में live आते हैं. So we hope that you do not want to miss these sessions, and if you don't, just subscribe to our YouTube channel. Also, a very quick thing, जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऐप के ऊपर we have a new feature called as Rubies. तो आप उन Rubies की हेल्प से आप बहुत सारे हमारे मास्टर क्लासेस हैं जिनको आप ओपन कर सकते हैं, प्लस आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ऐप के ऊपर से बाय कर सकते हैं. एंड उन रूबीज को जीतना बहुत ही ज्यादा सिंपल है. तो डू चेक आउट आवर ऐप. आपको ऐप के ऊपर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रूबीज की. हम लोग बहुत सारे फन सेशंस भी करते हैं ऐप के ऊपर, जैसे तंबोला वगैरह. तो उसमें आपको बहुत सारे रूबीज ऐसे मिलते हैं, तो जिसकी हेल्प से आप हमारे जो मास्टर क्लासेस हैं उनको ओपन कर सकते हैं, नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं उन रूबीज की हेल्प से. So I hope everybody is going to join us on the app. Until then, bye bye, take care, and have a great day, guys. I hope to see you all in the next session. Bye. Hey, bye bye, bye bye everyone. Bye, Lakshmi. Bye, Saloni. And don't forget to send me the picture, Lakshmi. Yeah, I'm sending it to you. Okay. So bye, everyone. See you all in the next Bye. session. Bye. See you. Bye. Bye.